बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए तो पंजाबी खबरां दे नाल मैं हनमरा मलिक। एक नज़र अज दी ताज़ा तरीन पंजाबी खबरां ते। हाउस डेमोक्रेट कॉक्स के चेयर हकीम जेफरेस ते वॉइस चेयर पीटर क्यूलर मीटिंग तो बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने जिथे वो सेनेट दे कानून साज़ां तो वोटिंग दे हकूक तो मुतल्लिक कानून साजी करन ते जोर दे रहे ने। United States, the Capitol was overrun by Trump supporters who wanted to assassinate Speaker Pelosi, hang Mike Pence, and hunt down members of Congress. You would think in the aftermath of that, they would run toward democracy. Instead, they've run away from democracy. That's what's going on right now in the United States Senate as a result of Republican refusal to back वोटिंग दे हकूक तो मुतल्लिक कानून साजी दे दो वड्डे टुकड़ियां ते सेनेट दे मुतवक्को वोट तो कबल हाउस रिपब्लिकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने। Do well with the order of because I told you so. Patients are better served hearing from the physicians that are actually treating. We're going to be effective against the next variant. Other than monoclonal antibodies, there really are no other therapeutic options available other than remdesivir. From this thing looks engineered. This thing is not consistent with evolutionary theory. This thing could not have happened in nature. This thing would be easy to do in a lab, to completely changing their position. And here's the kicker. The two guys who said those things, Dr. Anderson. सेनेट दे मुतअद्दिद रिपब्लिकन रूस यूक्रेन दी सरहद ते जारी सफारती कशीदगी ते गल करन दे लई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे ने। That we are going to impose devastating sanctions should this occur, and that we are going to provide additional military assistance to Ukraine. And we are going to help with regard to the other countries in the region to provide for their defense. And all of this, is something that we agree with on a bipartisan basis. I think the legislation you're talking about was done in response, in effect, to the Nord Stream 2 issue. Obviously, we're going to have some differences on that, and Senator Kramer spoke about that. But that's not going to keep us from coming up with a strong bipartisan bill that makes it clear that we stand with the freedom-loving people of Ukraine. We're working on that. There's discussions on there going on, ongoing right now. Senator, what was the overall response to the information you provided to the administration this morning in the secure briefing? I thought it was a very instructive and constructive discussion. I don't think मुख्तलिफ अमरीकियां दे मेयर्स दी अमरीकी कॉन्फ्रेंस दे आगाज तो कबल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे सन ते ग्रुप दी तरजीहात नू आउट करन दे लई असरात दे बाजियाब होण दे लई मुख्तलिफ शहरां दी कोशिशां ते तबादला ख्याल करदे सन। Always, there's three parties in America, Mr. Mayor. I said, well, really, Mayor, what are they? He goes, well, there's Republicans, there's Democrats, and there's mayors. That is the idea embedded deep in our souls. It's what makes mayors different. Pictures with each other, see the face of America, and feel the hope of America again. And I want to say something about our new president as well. I hosted a dinner at our Boston meeting a few years ago, and I remember he and then Cincinnati Mayor John Cranley were sitting next to each other. They talked about climate, they talked about immigration for an hour plus at dinner. And then Cranley turned to Suarez and said, "You're a Democrat, right?" He said, "No, actually I'm a Republican." And then Suarez बरतानी वज़ीर से साजिद जावेद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे ने ते तवक्को है कि कोविड-19 दे इक़दामात ते अपडेट दे रहे ने। Let's start with how we got here. Back in July, we made the decision to take step 4 of our roadmap, so that we could roll back the restrictions and move closer to normal life. Those lateral flow tests become negative and remain negative for the vast majority of people. What we have now advised is that, and looked at very carefully, is that the individuals who have 2 negative lateral न्यूयॉर्क एजी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਗਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਿਕ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਫਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
चीन के सफीर नोंगरोंग की GHQ आमद ISPR आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीनी सफीर के नाल मुलाकात की। चीनी सफीर ने पाकिस्तान भी CPEC मनसूबिਆਂ ਨੂੰ मजबूत माहौल की फराहमी ਨੂੰ सराहा। चीनी सफीर का इलाकाई इस्तेहकाम की काविशों में खसूसी इकदामात ते आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। चीनी वजीर वांग ही ने कहा कि चीन के आला म्यार की तरक्की ते मजीद वसपन की आलमी इकतसादी बहाली के लिए वड्डे फवायद हासिल होंगे। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ NI ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸੀ TV USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.desitvusa.com। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਮਹਦੂਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।